how was your probation in the 9 para, and any memories from that which you would like to share? Yeah, I can't share all the details of the probation, right? Of course, nowadays, even BBC gets an understanding. But primarily, whatever I tell you about the probation will be different for each individual. Of course, there will be some common things. कि दौड़ common होगा, पिट्टू पहन के वो speed marches होंगे, right? All of that would be there. There would be a lot of mental toughening. Okay, I think all those things would be there. But what are a couple of things that really I recall? Okay, so one incident which I can't forget, right? वो था कि, this was in J&K, right? As one of the exercises in the probation, we were given almost, I think, 100 kilometer. It was like a competition, but it was a navigation exercise. It was also that we were wearing weights. So it was endurance, come navigation, okay, come testing of your dam, right? Of how capable you are. So therefore, people were put in groups of 2 or 3, right? And they were sent one after another, like almost team. And every time they would reach a place, then they would get the map, they would get the, the destination for the next point. So that is how they were given. So I remember I enjoyed it much. We were like really, I think I was really hitting my points and all that and everything. But in that particular exercise, why I remember it, right, is because one boy died. One probationer died. Just of exhaustion, heart failure हो गया था. यानी कि या तो खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, या वो exhaustion इतना था ना, दौड़ रहे हो, रेस्ट नहीं ले रहे हो, it's a competition, people are saying, come on यार, आपके साथ वाले भी खींच रहे हैं, it's like you got to reach. So there's a lot solid pressure on that, right? And this boy collapsed. And what I remember is that जब हम गए, as fellow probationers, we went to his room. उसका जो जहां पे था, उसका जो चारपाई था, you didn't have rooms, you just had barrack, but उसके चारपाई के पास जाके, when we took his stuff and all, because we needed to pack it and send it to his home, at that time we found an unsent letter. यानी कि उस टाइम पे ना एक इनलैंड मेल करके नीले कलर का एक लेटर मिलता था. आजकल में शायद है, शायद नहीं है, एटलीस्ट मैंने देखा नहीं. आजकल तो ईमेल का जमाना है या व्हाट्सएप का जमाना है. ईमेल भी आजकल बहुत कम लोग भेजते हैं. So he was already married, और वो शायद हरियाणा का था और जाट था, एंड उसने अपने बीवी को खत लिखा था जो भेजा नहीं था, भेजने वाला था. It was open, so we could read, right? And जब वो पढ़ा ना, तो उसने ये बोला था कि लोग मजाक उड़ाते कि मैं सप्लाई का हूं. He was from the ASC, right? और उसने लिखा था बीवी को कि मैं अभी देखना, मैं कमांडो बन के दिखाऊंगा कि कौन है कमांडो, कि मेरे में क्या दम है, कि मैं कौन हूं, right? And that was so touching for me, right? Just that human spirit, right? For me, that was really touching. And what it appears to me is, in that speed march, he probably knew जहां पे वो stretch हो रहा है, उसको वो नहीं कर पा रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, उसको भी पता था. लेकिन मैं क्या दाग देना चाहता हूं, व्हाट आई रियली वांट टू अप्रिशिएट इज, वो जानते हुए भी कि मैं अपने शरीर के काबिलियत से बाहर निकाल रहा हूं, आई एम गोइंग बियॉन्ड माय बॉडी कैपेसिटी, वो जानते हुए भी उसने उस रेखा को पार किया, राइट? And that probably led to his body collapse. And why that is special for me is because वो वही spirit है जो लड़ाई में भी आपको, when you cross that line and saying ये final assault है, इसको क्रॉस करूंगा तो हो सकता है कि डेफिनेटली मैं, क्योंकि मशीन गन फायर आ रहा है, मैं वापस नहीं जाऊंगा घर. ये बंदा जो है, he also knew, इसको पता था कि at one point his body was, already getting, reaching its limit. When we were running, when we were running and navigating in those jungles and mountains of J&K in that exercise, उसको भी पता था कि मैं कहीं पे I am going beyond.
आप पता चल जाता है, ऐसा हो जाते हो ना, कितना भाग रहे हो, राइट? ओके, और पीछे लोड भी है और नेविगेट भी कर रहे हो, राइट? वो पता चल जाता है। और उसको पता था कि ये इस लेवल पहुंच रहा है कि अभी नाउ ही इज रियली पुशिंग बियॉन्ड द लेवल। सो एट दैट टाइम हर आदमी के साथ, हर औरत के साथ एक चॉइस होता है कि अभी मैं ब्रेक लगाऊं कि यार अभी मैं कुछ भी हो, मैं आगे नहीं जाऊंगा। सबको पता होता है और सभी एक्सरसाइज करते हैं, इसके आगे मैं नहीं जाऊंगा, इट्स अ लाइन। बट दिस बॉय, he crossed that line. He said, I don't care, the mission comes first. So he was like, but he said, come, let's go, oh, let's go. It's as though दिमाग में वो बंद हो गया था, it had stopped. It said mission is important. And for me, what I'm sharing with you is this is that same thing that makes the Indian Armed Forces so incredibly powerful. Any forces in the world, specifically I'm talking Indian Armed Forces, because जब लड़ाई में भी क्या होता है, when you know bullets are flying, there is some point when you know कि इस लाइन को मैं क्रॉस करके वो दुश्मन के फायर को क्रॉस करके मेरे को अटैक करना है. So I am coming in direct line of fire and the chances are I will pass on. 90% chances, 99% chances, शायद मैं इधर से वापस नहीं आऊंगा. So when you are charging in, let's say, a group of 10 or 20 and you're crossing that line, you know कि यहां पे से 2-4 वापस जाएंगे, बाकी नहीं जाएंगे. Got it. पता होता है लोगों को, बेवकूफ नहीं होते. So if you think that soldiers जो मरते हैं वो ऐसे अंधाधुन में, no, हर एक के मन में वो पता हो जाता है. We are human beings, हम मनुष्य हैं, right? लेकिन वो पता होते हुए भी उनको पता है कि शायद अभी मैं घर नहीं जाऊंगा और उस लकीर को मैं पार कर रहा हूं. तब भी वो जो एक भावना होता है, एक करेज होता है, एक धैर्य होता है, एक भूलना होता है कि मैं कौन हूं, मेरी क्या जिंदगी है, सब भूल जाते हैं और बोलते हो मिशन ही है. एंड आई थिंक दैट इज पावरफुल. एंड टुडे इफ वी आर इन कॉन्फ्लिक्ट, चाहे पाकिस्तान लो, चाइना लो, दे शुड नो दैट कि जिस दिन वो लाइन पार होगा, देन ट्रस्ट मी, उनके जो भी ऑब्जेक्टिव्स है, समथिंग डिफरेंट विल हैपन. क्योंकि लोग उस लाइन को पार कर देंगे, चाहे हमारे फाइटर पायलट्स हो, नेवल हो, आईटीबीपी हो, आर्मी हो. दैट्स व्हाट मेक्स आवर आर्मी सो पावरफुल, राइट? पीपल्स एबिलिटीज टू क्रॉस दैट. और जितने लोग हैं हमारे, एज द लार्जेस्ट आर्मी, इतने लोग जब वो क्रॉस करते हैं, देन जो भी दुश्मन है, दे बेटर गेट स्कैर्ड, चाहे तुम्हारे पास कोई भी टेक्नोलॉजी हो, राइट? एंड दिस इज ऑलमोस्ट अ मैसेज टू द enemies, right? कि they think कि वो पेपर का प्लान जो भी है, but this line is a very, very dangerous line for any enemy. Once the army crosses that line, magic happens. Yes. Lives go, but magic will happen, right? So yeah, that's I think this is what I really carry from my probation, something that really touches me even today, right? Got it. Which makes me respect all the people who cross this line, right? And not just, by the way, not just in the forces, across all fields. I was recently watching that movie of that mountain man, Maji. उसका भी तो वही था ना, वो पहाड़ था, वो कैसे मारे उस पहाड़ को, लेकिन एक मोमेंट में when his wife died, he crossed the line. और एक बार क्रॉस हुआ, then his life didn't matter, चाहे वो सांप काटे, चाहे कुछ हो, जब तक पहाड़ को नीचे नहीं गिराऊंगा, मैं रुकूंगा नहीं. So I want to celebrate in this moment not only the armed forces, but all the government services, all the private sector. There are fantastic human beings in all areas around us. And if today we are rising as a powerhouse, it is all these human beings in all areas who are crossing that line. Then it's no longer about them. जैसे अगर सेमीकंडक्टर बनाना है इंडिया के लिए, बनाएंगे. मिसाइल बनाना है, बनाएंगे. अगर एग्रीकल्चर में ये इंप्रूवमेंट करना है, करना है. अभी वैक्सीन को हमको बनाना है तो बनाएंगे. And that's why we've got all the best of everything that's getting created. Correct. So just celebrating that in this moment.